हेलो गाइस, मैं मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में, वाई पाकिस्तान एयर डिफेंस मिस्ड द इंडियन मिसाइल। अब ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ ये एक न्यूट्रल मीडिया, ना ये पाकिस्तान का है ना ये इंडिया का है, ये कोई फॉरेन कंट्री है। मुझे नहीं पता किसका, लेकिन इसका एक्सेंट बताता है कि ना ये पाकिस्तानी है, इंग्लिश बोल रहा है, और ना ये इंडियन है। तो देखते हैं वीडियो क्या कहता है, फिर बात करते हैं। In May 2025, India surprisingly struck multiple locations in Pakistan under Operation Sindoor. Pakistan retaliated, and in response, India targeted at least 9 air bases across Pakistan. Pakistan hit back by launching several Fateh, 2 short-range ballistic missiles. Before the situation could escalate into a full-blown war with even more deadly weapons, the United States intervened and forced both countries into a ceasefire. India sees its strike on multiple major Pakistani air bases as a key upper hand in this clash. But the big question remains, why didn't Pakistan's defense systems like the HQ-9 and others stop those attacks? Was it really a failure, or is there something else behind it? Back in 2019, after India's Balakot airstrike, Pakistan realized it needed to seriously upgrade its air defense. So, Pakistan turned to China and bought the HQ-9, a high-altitude, long-range surface-to-air missile system. Now, what exactly is the HQ-9? It can target aircraft, cruise missiles, drones, and even some ballistic missiles. It has an operational range of around 100 to 200 kilometers, depending on the variant, and is designed to intercept threats at high altitude. It is unknown that how much the HQ-9 batteries Pakistan has received or operating. Pakistan's air defense isn't just limited to the HQ-9. It also includes the HQ-16FE, a Chinese-made medium-range system designed to target incoming threats at shorter distances. Alongside this, Pakistan operates a network of radars covering low to high altitudes, allowing it to detect and track various aerial threats. The defense setup is further strengthened by electronic warfare systems that can jam or disrupt enemy aircraft, drones, and missiles. Alongside this, Pakistan has recently integrated artificial intelligence and space-based technologies to improve response time and accuracy in detecting and countering missile or aircraft threats. Using these systems, Pakistan claims to have achieved soft kills on multiple BrahMos missiles and Israeli-made Harop drones, launched by India. On paper, these systems seem like a strong defense, but in real-world combat scenarios, they have limitations and are not 100% effective against all types of attacks, just like other defense systems around the world. A major weakness in Pakistan's aerial defense, particularly the HQ-9 system, is that it cannot effectively stop air-to-ground missile attacks. During the May 2025 attacks, India mostly used air-launched supersonic and cruise missiles such as the BrahMos and Storm Shadow. These weapons are hard to detect, and being launched from the air adds another layer of complexity, making them even more challenging to track and intercept. Moreover, due to the close proximity between India and Pakistan and their long shared border, the flight time of air-to-ground missiles is very short and unpredictable, leaving very little time to react. Pakistan shares a 3,323-kilometer-long border with India. At some points, military units from both sides are just a few kilometers apart, and even the furthest point inside Pakistan is barely 1,000 kilometers from the Indian border, a relatively short distance for any incoming attack. Given the Mach 2.8 to Mach 3 speed of the BrahMos, it would take only 16 to 20 minutes to reach Pakistan's furthest point. Now imagine the time it would take to hit closer targets, even less. Indian missiles don't have to travel long distances.
which significantly reduces their flight time and limits the reaction time available to Pakistan's defense systems. Pakistan's HQ-9 air defense system is designed to perform best against high-altitude threats or missiles launched from longer ranges. But when it comes to close-range, low-flying, high-speed attacks, that's exactly where these systems struggle the most. So if a BrahMos was launched from just 50 to 200 kilometers away, Pakistani radars and defense systems would have had just seconds to detect, track, and shoot it down. That's barely enough time to blink. For example, Sargodha Air Base is about 200 kilometers from the Indian border, and Chaklala is even closer. If India fires from across the border, the missile could reach in under 2 minutes. That's not much time to stop a missile flying 3 times the speed of sound. Even the best air defense systems in the world may struggle to stop supersonic missile fired from close. Even Israel's Iron Dome, considered one of the most advanced defense systems in the world, can't guarantee 100% interception, even against basic Hamas rockets, especially when multiple missiles are launched at once or from very short distances. Now imagine advanced Indian supersonic missiles being fired in even larger numbers. That would have made it extremely challenging for the HQ-9 to intercept every single one. Same goes for Russia's S-400 or America's THAAD. Powerful, but not perfect. The close proximity of Pakistan also makes it difficult for India, even with the Russian S-400 defense system, to intercept Pakistani missiles, especially tactical ones like artillery rockets, short-range ballistic missiles, and cruise missiles, which have ranges between 70 kilometers and 700 kilometers. The S-400 is undoubtedly a powerful system, but it struggles to counter tactical missiles launched from short range and in large numbers. Even Russia, despite having the S-400, hasn't been able to fully protect itself from Ukrainian attacks. In short, the reality is this: there's no such thing as a foolproof air defense, especially when your enemy is right next door. Realizing this, Pakistan is not just relying on aerial defense systems. Along with dispersing and hardening its critical assets, it also uses mobile missile launchers and radar systems. These systems allow quick attacks and help avoid enemy retaliation by relocating immediately after use. The use of motorways as runways for fighter jets also adds flexibility and ensures aerial power remains available, even if air bases are under attack or compromised. Pakistan also follows a strategy known as deterrence through counterattack, meaning it relies on the threat of powerful and immediate retaliation to discourage the enemy from attacking in the first place. In simple words, if you hit me, I will hit you back even harder, so don't even try. This strategy often holds back the enemy from attacking, even when they have the capability and opportunity, because the fear of massive retaliation makes them. तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। इस भाई ने बड़े शानदार तरीके से, मैं कहता हूँ कि बड़ी प्रिसाइजली और एक तफसील के साथ समझाया है कि जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी वो इस वीडियो में पता चली हैं कि पाकिस्तान S-400 को क्यों नहीं रोक पा रहा, HQ-9 क्यों फेल हो रहा है। बड़ी अच्छी रीज़न दी है, क्योंकि इंडियन इतने खुल कर रीज़न नहीं देते। जाहिर बात है ये एक डिफेंस का भी मामला हो सकता है, लेकिन इस भाई ने सारी कहानी खोल दी है कि किस तरह HQ-9 फेल हुआ। तो उसने नहीं पकड़ पाया ब्रह्मोस को। उन्होंने कहा ब्रह्मोस एक तो HQ-9 सिस्टम का जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो देर लेता है डिटेक्ट करने में, सर्वे करने में। और इसकी रेंज दूसरी पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर क्लोज है, वो मतलब वो बता रहा था कि अगर इंडिया अपने बॉर्डर से मारता ना, पाकिस्तान का जो एंड वाला कोना भी है ना, मतलब एक साइड से मारता तो एंड जो लास्ट पॉइंट है पाकिस्तान का, वहाँ तक जाने में भी सिर्फ 15 से 20 मिनट लगने हैं, ब्रह्मोस हो या कोई इंडियन मिसाइल हो। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करना HQ-9 के बस की बात ही नहीं है। मतलब आज मुझे समझ आई है
कि HQ-9 फेल क्यों हुआ, बरामूस हिट क्यों किए। ज़ाहिर बात है एक दूसरे की कमजोरियाँ पता होती हैं। जो HQ-9 है वो ज़्यादातर जो है ना ग्राउंड टू एड जो आते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट करता है या फिजा में उड़ते हुए जहाज़ों को, लेकिन जो एयर टू ग्राउंड वो बता रहा था हिट करते हैं ना मिसाइल, उनको डिटेक्ट करना उसके बाद की बात नहीं है। तो इंडिया को ये पता था। अब इंडिया ने मारे ही सारे जहाज़ों से, राफेल से मारे हैं ये सारे बरामूस और दूसरे जो है, इंडिया को ये पता थी बात, लेकिन आज तक किसी इंडियन चैनल पर जो मैंने नहीं सुना। जिस तरह वो बोलता है कि वावेला नहीं बचाया, वावेला नहीं बचाया। इसकी वीडियो देखी तो पता चला कि क्या असल में हुआ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम सिर्फ इतना जानते थे कि पाकिस्तान से रुके नहीं। इसके पीछे कमजोरियां क्या थी वो इस भाई ने बताई। इस भाई का भाई थैंक्स। और ये ना कोई इसने कोई इंडिया से लेना देना है, ना इसका कोई पाकिस्तान से लेना देना। इसने एक जर्नल और सही जो मानो में रीजंस थे वो बताया। तो ये थी इस्लाम भाई अपनी कमजोरी, आप समझ आई हैं। देखें कि एक तो हमारे पास रिस्पांस टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि HQ-9 को रिस्पांस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, अच्छा ये भाई बता रहा था कि जब जो है ना ये 19 फरवरी का मामला जो है पेश आया, तो उस वक्त जो है ना पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना HQ-9 जो है वो लिया जाए। तो HQ-9 मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा, इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना उस भाई ने बोला है कि S-400 है, उसका जो आकाश के क्या नाम उसने बताया इंडिया वाला, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद उसने कहा कि आयरन डोम जो है इजराइल का, तो वो कह रहा था कि आयरन डोम भी इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता, नहीं टाइम थोड़ा हो। लेकिन है बेस्ट, वो बोल रहा था बेस्ट कहा उसने कहा कि अगर आयरन डोम भी जहाँ होता, जिस सिनेरियो में जिस लिहाज से इंडिया जिस हिसाब से बरामूस की स्पीड थी ना तेज, उस वजह से। तो बाकी भाई बरामूस जो है ना जब से ये मिसाइल जो है मारे गए हैं, तब से बरामूस जो है उसकी भाई बल्ले बल्ले वो बोलते हैं ना कि वाह वाह हो गई है। तो बाकी अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान के हुक्मरान जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए और उनको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो आपका, मुझे लगता है कि जो चीजें भी आपकी हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो इंडिया हिट करने से नहीं बाज आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास सबसे पहले जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डिफेंस सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए भाई। इस वजह जल्दी करे तो भाई इस वजह से मैं इस वजह से यही कहूंगा कि पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना वो डिफेंस सिस्टम पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे अहम जरूरत जो है पाकिस्तान की इस वक्त वो डिफेंस सिस्टम है। अब देखो ना कि पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी, क्योंकि उस भाई ने भी ये बोला, उसने कहा है कि जो हमला दूसरे पे करेगा तो जो दूसरा है वो उसका उससे ज्यादा बाकी HQ-9 की भाई रेंज भी बहुत कम है। S-400 की तो 500-400 किलोमीटर दूर से इसकी 400 है, इसकी मेरे में 100 है, 200 तक लगभग है, एंड 200। अब 200 दूर से बड़ा मूस आ रहा है, इसने 150 किलोमीटर से डिटेक्ट कर लिया। अब ये डिटेक्ट करने रिएक्शन होते करने में बड़ा मूस आगे निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिर उसने तस्वीरें दिखाई कि हिट किया, बड़ा मूस को रोक नहीं पाया HQ-9। तो ये फेलियर है, ये काम करने की जरूरत है हमें। अभी तक तो इसका तोड़ नहीं है, जिस तरह वीडियो में साबित हुआ कि बरामूस का अभी तक पाकिस्तान क्या मैं कहता हूँ जिस तरह वो बता रहा था कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसको भी ये मतलब क्रॉस करके हिट कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा। अब इससे भी ज़्यादा स्पीडी है भाई दुनिया में मिसाइल, इससे भी ज़्यादा स्पीड वाला है। अब हाइपरसोनिक बना रहा है, हाइपरसोनिक रशिया के पास है ना, USA के पास भी है, तो इंडिया भी अप्रूव कर चुका, वो भी बना रहा है। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान को कुछ सोचना होगा। ये जो डिफेंस का इतना बजट है ये कहाँ लगाना है, कुछ सोचो। हमारी कुछ इज्जत हम देख ले कि भाई जब फलस्तीन हमास वाले थे उन्होंने इजराइल पे हमला किया तो कितने मिसाइल जो उन्होंने मारे थे, उसके बाद ईरान जो है उसने कितने मिसाइल मारे थे। अगर उनके पास ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तगड़ा ना होता तो उनका भी हाल ऐसे ही होना था यार। उनको आज ये था इजराइल को ईरान दूर
पड़ता है। ईरान तो वाकई दूर पड़ता है, लेकिन हमास जो है, हमास ने इतनी दूरी से तो नहीं फेंके। अच्छा, लेकिन इंडिया का 400 और बरामूस में तबाही मचाई है मिलकर, और साथ में राफेल। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना अगर फिर इस तरह होता है। तो ये इंडिया की जीत रही है। उसने भाई ने भी कहा कि इंडिया को अपर हैंड रहा है, ये खुद बोला उसने कि अपर हैंड रहा इंडिया को इस पूरी जंग में। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान दमड़े मार रहे हैं, लुड़ियाँ मार रहे हैं, ऐसी कोई जेल कौम है नहीं, क्योंकि सर्च करनी ही नहीं ज्यादा हमारा यही होता है कि सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज्यादा वही बात कर रहा हूँ, सर्च करनी नहीं, कोई बात की गहराई तक नहीं जाना, कोई कह रहे कि बात को तोलना नापना नहीं है, ऐसे जैसे एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। और आज क्लियर हो गया कि बरामूस को क्यों नहीं रोक पाए, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कोताहियां थी हमारे डिफेंस सिस्टम, वो आज सारी समझ आ गई। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। टेक केयर।